Hi everyone, Ashish Kyal here and very warm welcome to Ashish Kyal Trading Gurukul। और आज जो मैं आपके साथ बात करने वाला हूं वो है बॉलिंगर बैंड्स ट्रेडिंग टेक्निक फॉर ऑप्शंस ट्रेडिंग एंड दैट टू ऑन अ क्रिप्टो करेंसी विच इज बिटकॉइन। और ऑप्शंस में ट्रेड करना पॉसिबल है बिटकॉइन में। आपने पहले भी अगर कोई वीडियोस देखेंगे जो मैंने पब्लिश किए एंड यू कैन कंबाइन दैट along with Bollinger Bands. Bollinger Bands is a very simple technique, and I have mentioned that in many of the assets. If you have checked my earlier video on Bollinger Bands on Nifty and other assets, similarly Bollinger Bands on options for trading Bitcoin. So यहाँ पर the best part about trading crypto is that it is independent to any kind of news that comes out. Usually, it is independent as when I say that it does not get impacted every now and then for some of the other news that comes out. It is moving more independently. एंड यहाँ पर अगर ट्रेंड शुरू होता है ना दोस्तों, तो बहुत ही अच्छा ट्रेंड मिलता है। इफ यू अप्लाई द सिंपल candlestick methods and follow the trend, it works out brilliantly well. So I've been doing my studies on Bitcoin. I've been trying to trade options on Bitcoin and try and see कि कहाँ पर पैसा बन सकता है. Can it be much more lucrative than trading any other asset? Because the risk involved in trading Bitcoin is also higher. So the reward will also be much higher. So I've been experimenting with it, and it has the strategy works exceptionally well. Whether you are option buying or even if you are doing option selling, it works super. और अगर आप स्कैल्पर हो, अगर आप स्कैल्पिंग करते हो, तो it works all the more classic. तो पहले तो मैं आपको बताता हूँ, एक प्लेटफॉर्म है जहां पर मैं ये ट्रेड करता हूँ एंड इट वर्क्स आउट वेरी वेल। और इट्स ऑन डेल्टा एक्सचेंज। लेट मी जस्ट शेयर अक्रॉस द स्क्रीन हाउ इट लुक्स लाइक। अगर आपने पहले भी देखा होगा और अभी कोई पोजीशंस है मेरी, लेट मी जस्ट शेयर दैट अक्रॉस वेरी क्विकली एंड देन वी विल गो ऑन द ऑप्शंस चार्ट एंड नॉट ऑप्शंस, बिटकॉइन चार्ट, एंड सी कि ये ट्रेड क्यों लिया था, कहाँ लिया था। सो दिस इज अ डेल्टा एक्सचेंज प्लेटफॉर्म एंड यहाँ पर यू विल सी लॉट ऑफ थिंग्स। इफ आई गो टू द मार्केट्स, I will be able to see all the details and what are the various options that are trading. And इसमें सबसे बेस्ट पार्ट है, there are daily options, weekly options, 2 days के बाद में कौन सा options है, सारी चीजें यहाँ पर आ जाती है। So it becomes very very convenient. यहाँ पर अगर मैं options की बात करूँ, बहुत ही simple way से आप यहाँ पर देख सकते हैं। You have a 24th August expiry, you have 25th August, you have 26th August, and different options are there along with the price and bid ask, and everything is very similar. Also, what you get is a leverage. If you're option selling, you get 100 times leverage. Imagine. And you can do it in any lots. मतलब आप 0.10 के quantity में कर सकते हो, 0.20 के quantity में कर सकते हो. So you can do that. That's what I loved about it. And यहाँ पर अगर जो भी positions है, so I'll go and show you the positions that you can see it from the wallet की अभी भाई मेरे wallet में कितना है, how much positions I have, what is the open positions, all of those things. You can see the transaction and everything over here. यहाँ पर जाके आप देख सकते हो कि what are the positions. So ये position ली हुई है. This is a very interesting position I want to share across, and I'm making nearly around 28.41% on this one. So this was an option selling. We offer strike price 31,500 का option strike यहाँ पे आप देख सकते हो. And this is of 25th August expiry, जो कल हो जाएगा. My entry price was $83. $83 पे एंट्री किया था and I have around 500 contract, मतलब 0.5 बिटकॉइन है, मैंने एक बिटकॉइन भी ट्रेड नहीं किया, because this is I'm experimenting with trading on Bitcoin and how it works. So I'm just trying to play around with strategies and see how much it can make, how much I can lose, and all of those things. And तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि from that $83 it is now currently quoting I think around 0.1, मतलब ये practically zero हो चुका है, तो making that $83, right? Or you in this buying of $83, I had just to make a margin requirement of around $184. Can you see that? So I'm making approximately 28.41% on the margin that I have used. So, and in how much time? I think this is just about 2 weeks time, and that's possible, right, in Bitcoin. और ये सारी चीजें आप देख सकते हैं. There is a transaction log, you can see. I've done a lot of other short tradings also, very near term, छोटे-छोटे trades भी किए हैं, जहां से you can weekly expiry के अलावा daily expiry होता है, एक दिन बाद का expiry होता है. Those things also you can see. So you can see all the call logs and
everything over transaction logs and everything over here. तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों। यहाँ पर अगर पोजीशंस, तो अगर मैं चलता हूँ पोजीशंस लेने के लिए, इफ आई गो टू द मार्केट्स अगेन टू चेक क्या कर सकते हैं, उसके पहले हमें देखना होगा कि भाई ओवरऑल चार्ट लग क्या रहा है, मतलब इज इट द ओवरऑल व्यू ऑफ Bitcoin is what and how we are applying Bollinger Bands and checking it. You can simply get everything here. You can create a watch list and I'll go to the spot chart now. ये spot price हो गया Bitcoin का. If I click on this, directly spot chart open हो जाता है. You can directly see what is the current price that is quoting, how it is moving. सारी चीजें यहाँ पर आपको दिख जाएगी. बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे इसे, बिटकॉइन को ऑन द डेली टाइम फ्रेम, यू विल बी एबल टू सी वेरी क्लासिकली। मैं इसे शिफ्ट कर देता हूँ नीचे, एंड यू कैन क्लियरली सी वन ऑफ द स्ट्रेटेजीज दैट यू कैन अप्लाई ऑन बिटकॉइन ऑन द डेली चार्ट, नॉट ऑन द आवरली चार्ट ऑल्सो। पोजिशनली अगर आप ट्रेड करें, बड़ा पैसा बनता है अगर आपने सही ट्रेड किया। बट रिमेंबर फ्रेंड्स, also there is a risk, so you have to trade with a stop loss. Very important, because if it goes against you, you need to know when to get out, and you can always place a stop loss in the system that you can see here. So if you look at the same strategy of Bollinger Bands, if you have checked my earlier videos, I am showing you the same strategy here on the daily time frame chart. पहली चीज तो मैं ये बताऊंगा, सिंपल कैंडलस्टिक का जो रूल है, if you looking at the candle and if I have a close below the low of the candle, so high is below the prior high, low is below the prior low, and close is below the prior low. When something like this happens, I can say that the overall trend has reversed on the downside. Do you agree with me, every one of you? अभी ये अगर आप देखोगे, from this point onwards, not a single candle on daily time frame until here has actually closed above the prior candle high, not a single candle. और उसके ऊपर यहाँ पर बैंड्स का कॉन्ट्रैक्शन था, and on the daily time frame this candle closed below the lower end of the band and the next candle took out the low. So this was the level where you could have thought of buying puts or selling calls. मैंने फिलहाल कॉल राइट करके एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, and it worked out brilliantly. So if you check Bollinger Bands plus the candlestick technique that we apply on Nifty, Bank Nifty and बाकी सारे एसेट पे भी, that has worked out extremely well even on a Bitcoin. This is just a Bitcoin. You can even trade Ethereum and there are other things. And the best part is now once I have the view, I can think of taking a trade on options. So for example, we can see the expansion that happened. It went on the downside sharply. And आप देख सकते हैं जो पोजीशन मेरी अभी भी है, जो कल एक्सपायर हो जाएगी, about 2 weeks back, a weekend, 2 half back, जो लिया था 31,500 का कॉल राइट किया था जब बिटकॉइन था अराउंड 29,500 के आसपास। तो ये जब मिड बैंड से ही स्ट्रगल कर रहा था ना, यहीं पे राइट कर दिया क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड अच्छा बन रहा था। एंड उसके बाद में वी गॉट अराउंड 2,000 पॉइंट फॉल, मोर देन 2,500 पॉइंट फॉल रेदर ऑन द डाउन साइड, एंड इट वर्कड आउट ब्रिलियंटली। सो कुछ नहीं करना है, खाली राइट करके रख दिया। बाद में once it is down, you know it's not going to go up because of strategy, and you have a stop loss in the system so that you don't lose anything. Now if you check here, overall after the downtrend, we can clearly see this is the first candle which has shown an attempt on the upside, protecting the prior candle low. So high above prior high, low above prior low, and the close is above the prior candle high. Now in this scenario, we can say that possibly Bitcoin might start showing sideways action या pull back, और थोड़ा सा अगर आप डेटा और लेके देखेंगे इस पे, तो हमें पता चल जाएगा कि यार यहाँ पर we can clearly see a prior price action support area. तो वही सपोर्ट पे आके बिटकॉइन थोड़ा सा बाउंस हो रहा है। ऐसे सिनेरियो में क्या कर सकते हैं हम? ऐसे सिनेरियो में ये जो लो बना है बिटकॉइन का 25,300 का, वी कैन थिंक ऑफ सेलिंग अक्रॉस 25,000 का पुट ऑप्शन। ठीक है, दैट आई एम गोइंग टू डू बाय सेलिंग अक्रॉस 25,000 का पुट ऑप्शन ऑन द डाउन साइड, विच इज जस्ट बिलो दिस लेवल। लेकिन एक और चीज मुझे ये ध्यान रखनी है, दैट आई एम गोइंग अगेंस्ट द मेजर ट्रेंड, एंड दिस इज नॉट ऑन द बेसिस ऑफ बॉलिंगर बैंड। बॉलिंगर बैंड का जो टेक्निक था
उसके बेसिस पे हमें ऑलरेडी ट्रेड मिल चुका है और बहुत अच्छा मूव मिला है। अभी एक्सपेक्टेशन ये है कि शायद ये पूरा रेंज में फंस जाएगा। तो ऐसे एक्सपेक्टेशन में ऑप्शंस में हम क्या कर सकते हैं, वी कैन सेल कॉल ऑप्शन 28,000 के आसपास which is above the mid band and we can sell a put option which is below। कौन सा स्ट्राइक प्राइस होगा, बिकॉज ये डेली टाइम फ्रेम देख रहे हैं, द स्ट्राइक प्राइस दैट वी कैन सिलेक्ट इज अराउंड 28,000 on the upside at least 1500 points away and we can select approx 25,000 which is again 1500 points away का ट्रायंगल बना सकते हैं हम ऑप्शंस में ट्रेड कर। तो यहाँ पर अगर आप ऑप्शंस में आ जाएंगे देन यू विल बी एबल टू सी कि कौन से स्ट्राइक है। सो आई एम नॉट गोइंग टू गेट इनटू ऑप्शंस का चार्ट राइट नाउ, आई एम गोइंग टू फॉर्म सम स्ट्रैटेजी हियर। स्ट्रैटेजी बनाने के लिए आज की एक्सपायरी लेके तो मतलब ही नहीं, आई डोंट थिंक कल की एक्सपायरी पे भी कुछ मिलेगा। सो 26 अगस्त की एक्सपायरी पे देखते हैं कि कुछ मिल रहा है क्या हमें। इफ यू स्क्रॉल डाउन यू विल बी एबल टू सी द वेरियस स्ट्राइक प्राइसेस दैट आर देयर। along with that we can see this is 26 August, हाँ मैं वही देख रहा था, and you can see the overall movement of the market with respect to कि क्या चल रहा है, कहाँ पर है, everything is mentioned here and that's the best part। so यहाँ पर अगर आप देखोगे तो strike price है, I was just checking कि what is the mark value। so अगर हम 26,000 देख रहे हैं 28,000 जो ऊपर में देख रहे हैं हम वहां पर अगर हम देखेंगे 28,000 का ऑप्शन प्राइस चल रहा है, कॉल ऑप्शन $45 एंड आईवी बहुत ही अच्छा है। सो 28,000 का $45 पे बिटकॉइन का ऑप्शन है। सो आई कैन सिंपली क्लिक ऑन दिस एंड डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करने के बाद में ये ओपन हो जाता है। आफ्टर इट हैज ओपन 28,000 का कॉल अगर मुझे राइट करना है यू कैन सिंपली गो एंड सेल अक्रॉस दिस ऑप्शन। यहाँ पर जाके 28,000 का कॉल ऑप्शन and I can select a simple quantity like I said I want to sell just 100 contract मतलब 0.1 बिटकॉइन। तो ये कितना चल रहा है 45, मतलब मैंने 0.10 बिटकॉइन, आई एम सो सॉरी दिस इज 100 कॉन्ट्रैक्ट 0.10 बिटकॉइन। तो मतलब $4.5 का पोजीशन मैंने बना लिया अगर मैं इसे सेल करता हूँ। सो यू जस्ट हैव टू डू हियर एंड यू कैन सिलेक्ट द बेस्ट स्पीड और यू कैन सिलेक्ट द मार्क वॉट एवर यू वांट टू सिलेक्ट एंड यहाँ पर जाके इफ यू प्लेस मार्जिन देखो ना कितना लग रहा है, यू गेट 100 टाइम्स लिवरेज। सो हार्डली कुछ मार्जिन रन रहा है। सो आई कैन सिंपली कम हियर एंड डू अ 0.2 बिटकॉइन जस्ट टू गेट सम अमाउंट ऑफ कंफर्ट। सो यहाँ पर $52 लग रहा है एंड आई कैन गो एंड सेल दिस पोजिशन डायरेक्टली। आई कैन गो एंड यहाँ से पता चलता है हाउ मच मार्जिन आई एम गेटिंग एज अ लिवरेज, what is the estimated premium to be received, what is the limit and all of those things। This is for day after tomorrow। तो यहाँ पे गया प्लेस ऑर्डर किया एंड ऑर्डर इज सबमिटेड एंड वी विल सी ऑर्डर इज एग्जीक्यूटेड ऑल्सो। तो ये हो गया हमारा 28,000 का बिटकॉइन ऑन दी अपसाइड वी आर सेलिंग। नाउ नीचे हम 25,000 भी राइट करेंगे पुट साइड पे। सो यहाँ पर अगर आप जाओगे यू माइट स्क्रॉल अप एंड यू माइट बी एबल टू सी 25,000 का बिटकॉइन। लेट मी जस्ट स्क्रॉल दैट अप एंड 25,000 का बिटकॉइन अगर हम देखेंगे पुट साइड पे we are getting approximately 27.8 और अराउंड उसके आसपास है। so we can sell it around 24। IVs अच्छा है थोड़ा सा तो we can do one thing, we can select even 28,200 और अगर प्रॉपर स्ट्रेंगल करना है तो 28,400 करना पड़ेगा, तो बहुत नजदीक आ जाएगा। आई वांट टू कीप लिटिल सेफ क्योंकि ट्रेंड ओवरऑल नीचे का है एंड आई एम एक्सपेक्टिंग साइडवेज एक्शन। सो आई माइट सिलेक्ट 25,200 का ऑप्शन एंड आई कैन सिंपली कम हियर, select a Bitcoin quantity as 0.2 and I'm selecting the best speed and I can simply click on sell and place order and my positions get directly executed। so यहाँ पर order place किया, positions execute हो गई। now you can simply go and check on the positions tab, on the transactions tab यहाँ पर से कि क्या क्या positions है। फिलहाल unrealized negative इसलिए दिखा रहा है because there is a transaction fee that you end up paying and we have sold at the bid price। so mark price से अगर ये कैप्चर कर रहा है तो it will show you minor loss but that is okay। so क्या इंपॉर्टेंट था दोस्तों, यहाँ पर हमने क्या देखा, basis of the price action Bollinger Bands we are expecting now a range। since we are expecting a range we are now placing an order by selling both the calls and the puts। लेकिन इतना ही नहीं करना है,
हमें स्टॉप लॉस भी डाल के काम करना है. सो स्टॉप लॉस क्या करेंगे? इफ यू गो ऑन दिस, there is something known as a bracket order. You can simply go and select the close your position, or you can select a stop loss. You can do, just let me scroll down and show it to you. यहाँ पर जाके आप bracket order डाल के positions को stop loss edit कर सकते हैं. So you can even close the positions here. For close the positions, it will directly go and close your entire position. You have already bought it. So this way you can simply trade. I'm just showing you how to trade about it. So यहाँ पर आप trade कर सकते हो. Let me re-add the position. वो वहाँ पर this is something which is 25,200 and 28,000 का जो positions था हमारा, वो जाके वापस से हम add कर लेते हैं. So let me just go back and go to the options, and I'm going to re-add my position just to showcase to you. I just took that trade for explaining it to you. So 26th August का हमारा था. I will go to 26th August. I will go to 28,000 नीचे में. Okay, and we can go around this area. We can select this option and we can directly execute it. Okay, so यहाँ पर जाके best bid पे मैं sell कर रहा हूँ. You can place the order and it will get executed. So इस transaction में थोड़ा नुकसान हो गया because of the transactions that we did, but this is how you have to essentially trade. And ध्यान रखना दोस्तों, you have to put the stop loss also in the system if you want to trade so well. So अगर आपको ये पसंद है कैसे बिटकॉइन को ट्रेड किया जाता है, कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है, कैसे सिमलेस है पूरा सिस्टम, so do ensure to like this video, share it with your friends. And अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं, you will have a referral link which is there in the comment box. You can simply click on that referral link and you will get also some bonuses and some amount that is waived off as a transaction or the brokerage. So do ensure you take advantage of this. You are able to trade well, but so दोस्तों stop loss के साथ काम करना है. It's always a risk involved. Keep in mind and do not try and do anything big. First learn this. Once you are comfortable with it, you will really enjoy it because options are there and expiry हर दूसरे दिन की आपको मिल जाती है. So do ensure to check, like, share this video and how to trade options using Bollinger Bands technique and the candlestick and form option strategies. That's what I have explained it to you. And do ensure to open an account by just clicking on the link which is there in the comment and the description. Ashish Kyal signing off. Thank you very much.